Hello, hello. Hmm. Hmm. Okay, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I think we are online. Are we online? Okay, yes, we are. Okay, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to your lab session number two. And this time we are going to learn about airfoil specification and critical calculations. If you did hear some stupid noises. Okay, so yes, if in case you heard some stupid noises, please ignore that. I was trying to check the mic. Okay, so now, Achal, you guys can mark your attendance right now. All right, for the sake of simplicity, at the beginning of our session, there would be an attendance and mark your attendance. So, with that in parallel, I will move forward to our lab session. Okay, so एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करते वक्त obviously there are like so many different reasons, so many different formulas, so many different critical stuff that we have to really worry about while we are designing our aircraft. एक एयरक्राफ्ट में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, नेचुरल फिनोमेना देखे जाते हैं और उसके ऊपर एक्टिंग फोर्सेस देखी जाती हैं. See, there are a lot of things. There's drag. There's coefficient of pressure. There are a lot of things. ठीक है. But एक होता है ना बिल्कुल basic, step down, really, broken down into pieces.
जो बिल्कुल नीचे क्रम्बल बचता है, which is the basics, which is the first, let's suppose, I would say the first, building stone of designing an aircraft. वो कैलकुलेशंस जो कि एक एयरक्राफ्ट का मेन मकसद गवर्न करती हैं, जिन्हें कैलकुलेट करके आप अपना एयरक्राफ्ट जो है वो इनटू बीइंग ला सकते हैं. दोज आर द कैलकुलेशंस दैट वी विल गो थ्रू इन दिस लैब. अच्छा. Now, first of all, these are your pre-lab section area. You have to, answer these questions. Uh, Attach your answers with this lab. Okay. Your lab number one was you had to create a figure of merits, and yeah, submit it as well. So, एयरफॉइल क्या होती है? ठीक है, एक एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के पास विंग होता है, विंग से ऊपर लोअर प्रेशर जोन होता है, नीचे हाई प्रेशर होता है, एंड ऊपर हाई वेलोसिटी होती है, नीचे लो वेलोसिटी होती है, स्टफ लाइक दैट, और एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ जाता है. सिंपल. बट एयरफॉइल जो है वो अगर आप अपने एयरक्राफ्ट के विंग को कट कर दो और उसका एक सेक्शन निकाल दो, तो जो उसकी शेप होती है दैट इज एन एयरफॉइल. ओके. वो बेसिक उसके पीछे एक अच्छी खासी कैलकुलेशन है, उसके पीछे एक बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशन होती है, इन डेप्थ उसकी क्या कहते हैं शेप के पीछे जो है वो रीजनिंग होती है, रिसर्च होती है. सो तब जाके एक एयरफॉयल डिजाइन होती है. सो नासा ने या एज वी आल्सो कॉल इट नाका, सो जो नाका ने हमारे कुछ एयरफॉइल्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर दी हैं for the ease of new students or learners, or people who really are not into aerospace that much, but also want to design their own aircrafts. So नाका ने कुछ एयरफॉइल्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर दी हैं. By the way, NASA was also called NACA earlier in I don't know what century, but that's why I'm calling it NASA as well. अच्छा खैर. So नाका की एयरफॉइल के 4 या 5 डिजिट्स होते हैं. ठीक है. मेनली ज़्यादातर हमारे पास 4 डिजिट विंग सेक्शंस होते हैं. ठीक है, जो कि आपके विंग की प्रोफाइल डिफाइन करते हैं. अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई 2412 एयरफॉयल. ठीक है, तो 2412 इज अ कोड, बट ये कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्पेसिफाई करता है, डिफाइन करता है, दैट इज इट हैज द मैक्सिमम कैम्बर ऑफ 2. कैम्बर इज यू नो आसान लफ्जों में जो आपके एयरफॉयल के अंदर जो कर्व आ रहा है, इनसाइड कर्व, सही है, इनसाइड कर्व ऑल्सो आउटसाइड कर्व, उनका जो मिड सेक्शन होता है दैट इज नोन एज द कैम्बर लाइन. ठीक है, दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर विंग to the maximum end of the wing. So that is known as camber line. कैम्बर स्पेसिफाई करता है कि विंग के अंदर कर्व कितना है. ठीक है, अदर देन दैट जो 4 है दैट स्पेसिफाइज कि लोकेशन का है उस कैम्बर की. ठीक है, यहाँ पे लाइक 4 मीन्स 40% ऑफ द कॉर्ड, फ्रॉम द लीडिंग एज, यानी लीडिंग एज जो बिल्कुल मैक्सिमम फ्रंट है विंग का, उससे 40% पीछे जो है वो आपका कैम्बर जो है वो एग्जिस्ट करता है. लेट्स सपोज अगर मेरे पास 10 इंच का कॉर्ड है, तो मेरे पास तकरीबन, अगर मैं फ्रंट को 1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे 4 पे 4 इंचेस
पे मेरी कैम्बर मैक्सिमम कैम्बर जो है वो एग्जिस्ट करेगी, विच इज अ कैम्बर ऑफ 2%. 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ योर कॉर्ड लेंथ. ओके. ऑल्सो जो एंड का 1 2 है, दैट स्पेसिफाइज द परसेंटेज of the maximum thickness of your wing. Okay, so 1 2 is like 12% of the chord length. तो यानी chord length अगर 10 है तो उसका 12% निकाल दो और that would be the thickness, 1.2 something. 1.2 इंच की thickness होगी अगर 10 इंच का chord है तो. ठीक है. So that is how an airfoil is defined. That is how an airfoil is designed as well. ठीक है. Normally, like when we were designing our aircraft, we had Atisham with us, Ahmad, Shariar, Tahreem, Wahaj as well. So all of these people were there, and we were designing our aircraft, which was Sarem and Aviator. So, like for SRM, we used 4415, okay, which has like 4% of the camber at 40%, and with a maximum thickness of 15% of the cord. So 4415 has like I think the most extreme level of lift. Okay, obviously there would be some combination जो कि 4415 से ज़्यादा lift generate करता होगा with less time, oh sorry, with less speed. ठीक है. But 4415 was indeed a really high camber wing, and जिसकी जो कि लो स्पीड्स पे भी फ्लाई कर सकता है. लो स्पीड्स पे बिकॉज जितना बेहतरीन आपका विंग होगा, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर अ स्टंट प्लेन, सारेम वाज supposed to be a stunt plane, but it wasn't, because उसके camber was not, उसके basically airfoil जो है वो काफ़ी हद तक एक standard aircraft से थोड़ा ज़्यादा था. So it was supposed to be a stable aircraft, and it was. It was a stable aircraft. If not, counting for the air pressure here in Karachi. So yeah, otherwise it was a very, let's say, stable aircraft. So उसकी जो केम्बर थी, उसकी जो विंग की जो एयरफॉयल थी, दैट अलाउड दैट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई एट लो स्पीड्स. ठीक है. नाउ इसी तरह यू गाइस कैन इमेजिन कि कम जैसे जैसे कैम्बर कम होता रहेगा, वैसे वैसे आपकी जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. ठीक है. It would need a high speed to sustain itself, and well, so on. So NACA 0015 is an airfoil which is symmetrical. See, जिस भी एयरफॉयल के स्टार्टिंग में 00 आ जाए, दैट इज अ सिमेट्रिकल एयरफॉयल. सही. विच मीन्स कि जाहिर सी बात है उसमें ना कॉर्ड, सॉरी, उसमें ना कैम्बर है, और ऑब्वियसली जब कैम्बर नहीं है तो कॉर्ड की लोकेशन बताना भी कोई, आई थिंक, पागलपन होगा. So there is no camber, there is no need for the location. So it's 00. It's a symmetrical airfoil. जैसी वो ऊपर से है वैसी वो नीचे से, यानी नीचे भी उसके सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा. आइडियली, नॉट रियली, आई मीन ऑब्वियसली अगर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा तो एयरक्राफ्ट उड़ेगा ही नहीं. तो ऑब्वियसली नीचे जो है हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है. But it's symmetrical. It's kind of, these type of wings go best with your stunt planes, with planes that are not stable. ठीक है. So that's why these kind of airfoils go with those planes. Also हमारे जो पीछे टेल हो गई, वर्टिकल टेल एंड हॉरिजॉन्टल टेल, उनमें सिमेट्रिकल एयरफॉइल्स यूज होती हैं. अराउंड 0012, 0010 समथिंग,
इस तरह की टेल्स जो हैं वो यूज होती हैं. डिपेंड्स हाउ थिक यू वांट इट. सो दैट्स ऑल अबाउट योर एयरफॉइल्स. ठीक है, तो आप अपने लिए एयरफॉइल सेलेक्ट करें. मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि किस तरह का एयरक्राफ्ट होना चाहिए, क्या क्या उसमें करना चाहिए, बट अगेन इट शुड also be a stable aircraft. I don't want an unstable aircraft. So you're looking for something in between um, a stunt plane and also a standard plane. So something in between that. तो उसके लिए let's start our calculations. अच्छा सर, एयरफॉइल ज्योमेट्री देख लेते हैं. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी. खैर, दिस इज योर लीडिंग एज. ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस की पोजीशन ये होती हैं 30% to 40%. ठीक है, this is your 40%, this would be your 30% something, or maybe 30. No, it's 30%. Yeah. तो ये आपके एयरफॉइल का जो मैं कह रहा था, 40% फ्रॉम द लीडिंग एज, 30% फ्रॉम द लीडिंग एज, दैट इज व्हाट एन एयरफॉइल describes. So then we have this camber line. Camber line goes around your, at the center of your airfoil to show कि कितना उसमें camber है, कितना नहीं. ठीक है. अच्छा, ट्रेलिंग एज मैक्सिमम थिकनेस बता दी. मैक्सिमम थिकनेस आप ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम थिकनेस बिल्कुल सेंटर की हो. तो ये मैक्सिमम थिकनेस आगे पीछे भी होती है. अक्सर मैक्सिमम थिकनेस टेढ़ी भी होती है. ठीक है, लाइक इन दिस एयरफॉइल. लेट मी जस्ट, वेयर एम आई? ओके, दिस इज रॉन्ग. So like in this airfoil, maximum thickness is kind of curvy. तो बेसिकली उसको थोड़ा सा हमने जो है वो एट अ टेपर एंगल हमने मैक्सिमम थिकनेस को नोट किया. So just like that, अच्छा, we have a lot of airfoils here for your, I don't know, imagination. तो ये इनमें से कुछ airfoils obviously practical नहीं है, but you can look at these. अच्छा खैर, anyway, not interesting. Now, angle of attack. Angle of attack क्या होता है? Angle of attack होता है the angle between your relative wind compared with your chord line. ठीक है, ये थी किताबी डेफिनेशन. Now, कॉर्ड लाइन बेसिकली आपका जो मैंने जैसे बताया था, कैम्बर लाइन होती है. कैम्बर लाइन जो होती है, कैम्बर लाइन ये वो बताती है कि आपके जो एयरफॉयल है उसके बिल्कुल सेंटर से वो क्रॉस होती है, एंड इट इज कैम्बर्ड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैम्बर्ड लाइन. ठीक है, बट देयर इज आल्सो वन थिंग, दैट इज अ कॉर्ड लाइन. कॉर्ड लाइन जो है आपकी लीडिंग एज जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहां से स्ट्रेट लाइन खींच के ट्रेलिंग एज तक ले जाओ. दैट इज योर कॉर्ड लाइन. और एंगल ऑफ अटैक होता है आपका कि विंड आपकी किस एंगल पे अटैक कर रही है, और आपकी जो कॉर्ड लाइन है वो किस एंगल पे है. ठीक है. नाउ हमारे पास कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक होता है 13 डिग्रीज या 14 डिग्रीज, और -8 डिग्रीज, समथिंग लाइक दैट. तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि वो जब 13 डिग्रीज पे एयरक्राफ्ट जाएगा, वो उसका मैक्सिमम कैम्बर होगा, सॉरी मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक होगा. ठीक है, मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक पे जाने के बाद अगर वो मजीद अपने आप को पिच अप करता है, तो एयरक्राफ्ट को क्या होगा, एयरक्राफ्ट हो जाएगा स्टॉल. सही, स्टॉलिंग एंगल पे चला जाएगा. स्टॉलिंग एंगल पे क्या होता है कि आपकी लिफ्ट जो है वो फिर जनरेट होना बंद हो जाती है. सही है, नेगेटिव लिफ्ट जनरेट होती है. तो एंगल ऑफ अटैक हमें ये चीज़ बताता है. यहाँ पे जैसे वी गाइस कैन सी
तीन मैंने एयरफॉइल्स को आपस में कंपेयर किया, one with the zero camber, one with a positive camber, one with a negative camber. ठीक है, obviously negative camber is अच्छा negative camber का airfoil का यूज होता होगा, any guesses? ठीक है, अच्छा क्या, whatever you guess just write it down in the chat. ठीक है, कि negative camber use कहाँ होता है, ठीक है, so while I move forward. Now, there is like asymmetrical airfoil को सबसे पहले हम देखते हैं। सिमेट्रिकल एयरफॉयल में आपकी कैम्बर नहीं होती, और देयर इज नो कर्व, नथिंग। सो सिमेट्रिकल एयरफॉयल में आपके पास सबसे कम लिफ्ट जनरेट होता है। ठीक है, सबसे कम लिफ्ट में भी आपने अपने आप को एक सर्टेन एंगल ऑफ अटैक जनरेट करना होता है लाजमी, जस्ट लाइक ओवर हियर। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक आप जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि आपका विंग किस पोजीशन पे है, तो आपको अपने एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना पड़ेगा in order to generate some lift in a symmetrical airfoil. सही है, बट symmetrical airfoil के एंगल ऑफ अटैक, स्टॉलिंग एंगल काफ़ी देर बाद आता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर विंग्स, सिमेट्रिकल एयरफॉयल का स्टॉलिंग एंगल जो है वो उससे थोड़ा टाइम लगता है, यानी इट कैन गो फॉर a further more angle of attack as well. So other than that, फिर हम आते हैं पॉजिटिव कैम्बर एयरफॉयल की तरफ। ऑब्वियसली पॉजिटिव कैम्बर एयरफॉयल में हमारे पास ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक आएगा। एज यू गाइस कैन सी कि मैंने इसे एंगल ऑफ अटैक दिया भी नहीं है, मेरा एंगल ऑफ अटैक नेगेटिव है, बट स्टिल वी आर गेटिंग लिफ्ट। ठीक है, हम बेसिकली लिफ्ट को और एंगल ऑफ अटैक को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज योर नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक। सही है, यानी आपका जो एंगल ऑफ अटैक है वो विंग नीचे है, but still you guys can see we are getting a lift here. ठीक है, और इसमें there's a point where we reach the stalling angle और हमारी लिफ्ट फिर जनरेट होना बंद हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा हाई कैम्बर होगा लाइक 4415, तो उसका जो एंगल ऑफ अटैक जो वो और भी ज़्यादा पीछे चला जाएगा, और लिफ्ट जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, यानी आप लेट्स से ना पिचअप करने की नीड है ना कुछ करने की नीड है, आप इतना एयरक्राफ्ट स्ट्रेट उड़ाएं और आपके पास एक लिफ्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, so this is what a camber does to you. ओके, एयरफॉइल की थिकनेस का लिफ्ट कोफिशिएंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमने एक बेसिकली ग्राफ बनाया। से बहुत ज़्यादा थिकनेस भी आपके लिए अच्छी नहीं है, बहुत कम थिकनेस भी अच्छी नहीं है, सो यू गाइस नीड अब जैसे अल्फा है। ठीक है, sorry, coefficient of lift versus alpha. Alpha is your angle of attack. ठीक है, तो आप देखें जितनी थिकनेस होगी उतना आप पीछे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, नेगेटिव अल्फा से, एंड यू आर रीचिंग हाई अल्फा एज वेल। यहाँ पर एक नंबर 2 देखने वाली है कि जो कि पता नहीं किस तरह से वर्क कर रही है, लेकिन कुछ अजीब इसका ग्राफ आ ही रहा है। That it's starting from a positive CL, say, it's going to negative as alpha is increasing, and there's a point here at where the coefficient of lift is equal to 1 or more than 1, 1.2, something like that, और ये अगेन एकदम से ड्रास्टिकली नीचे आके दोबारा ऊपर जाता है, बट खैर एनीवे दिस इज एन आइडियल कंडीशन। सो जितनी आपकी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना आपके पास लिफ्ट कोशेंट भी अच्छा आएगा, बट बहुत ज़्यादा थिकनेस भी रखना सही नहीं है। सो वी गो फॉर मोर देन लाइक अराउंड 1.4 and 1.5, as you guys can see 1.4 is the best।
over here. ठीक है, so 4414 4415 something like that. अच्छा खैर, right, when you are done with all of these, चाहिए आपने इसमें एक टेबल जनरेट करना है, ठीक है, जस्ट लाइक द वन हियर। और बाय द वे तुम लोगों ने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई हम क्यों यूज करते हैं यार, क्या कहते हैं, नेगेटिव कैम्बर। नेगेटिव कैम्बर की क्या जरूरत है? खैर मुझे पता है कोई भी सुन रहा है नहीं, और हर कोई अपने दूसरे कामों में मसरूफ है, और उन्होंने बस अपना यूट्यूब लगा के छोड़ दिया है। So no, not for maneuverability. I mean, negative camber is used in cars. Spoilers. Spoilers are negative camber. Spoilers are like your inverted wings. But thank you for listening. Plus marks. So that's why negative camber is used. Negative camber में negative lift होती है। हम लोग जो स्पोर्ट्स कार्स वगैरह होती हैं जितनी भी, उनके अंदर आपने देखे पीछे अच्छा खासा स्पॉइलर लगा हुआ होता है, दैट इज जनरेटिंग नेगेटिव लिफ्ट, जो कि गाड़ी को ज़्यादा ग्रिप देती है, और ज़्यादा ग्रिप देती है और गाड़ी को रोड पे फिक्स रखती है। यस एग्जैक्टली लाइक F1 कार्स। वेरी गुड, एट लीस्ट समवन इज लिसनिंग। अच्छा खैर, नाउ डायमेंशनल पैरामीटर्स जो आप लोगों के पिछले लैब वन में तुम लोगों ने काम कर लिया होगा, अब तक नहीं भी किया होगा तो खैर है। तो एक टेबल बनाना है इन दी एंड, जब सारी चीज़ें फिक्स हो जाएं तो उसमें आपने बताना है कि विंग का स्पैन कितना है, कॉट कितना रखा है, एस्पेक्ट रेशियो कितना रखा है, विंग का एरिया कितना है, एयरफॉयल कौन सी यूज़ की है, ठीक है, एलरॉन डिफाइन करना है। ये सारी चीज़ें इस तरह का एक टेबल बनेगा, एक्सेप्ट फॉर मोटर एंड बैटरीज, ओके, एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम। इन तीन चीज़ों को छोड़ के ये जो पूरी कैलकुलेशंस आज करोगे, इनका ये टेबल बनेगा, एक्सेप्ट फॉर मोटर बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम, ओके। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, एंड एट द एंड ऑफ आवर लैब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ को डिफाइन भी किया हुआ है, रूट कॉर्ड क्या होती है, टेपर रेशियो क्या होता है, टिप कॉर्ड, कॉर्ड की एवरेज किस तरह से निकलती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट लेट्स कम टू द मेन एरिया विच इज योर एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। Aspect ratio is your span square upon your area, and area is span into chord, which means aspect ratio is equal to span over chord. ठीक है, simple as that. Aspect ratio is equal to span over chord. Now, मैंने तुम लोगों को विंग स्पैन बता दिया है। विंग स्पैन शुड नॉट बी मोर देन 2.5 मीटर्स, ठीक है। 2.5 मीटर से ज़्यादा विंग स्पैन नहीं होना चाहिए। वो डन हो गया, तुम लोगों के पास विंग स्पैन आ गया विच इज 2.5 मीटर। अभी तुम लोग अभी फिलहाल मैक्सिमम पे मैक्सिमम्स को क्या कहते हैं वो कंसिडर करोगे। विंग स्पैन आ गया, एयरक्राफ्ट का वेट दिया हुआ है, वेट इज आल्सो अराउंड 2.5 to 3 kgs, so yeah, don't go more than 2.5 or 3 kgs. That should be, so by the way, let me just confirm this. Hmm. Yeah, 2.5 meters. ठीक है, एंड 2 kgs। तो एयरक्राफ्ट का वेट आ गया, एयरक्राफ्ट की यू नो विंग स्पैन आ गया। ये दो चीज़ें आप लोगों को नोन है, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ जो आप लोगों ने डिसाइड करनी है, विच इज़ योर एस्पेक्ट रेशियो। मैंने कहा आप लोगों को एयरक्राफ्ट चाहिए स्टंट प्लेन और एक यू नो नॉर्मल प्लेन, स्टेबल प्लेन जो होता है, इन दोनों के दरमियान स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट, इन दोनों के दरमियान का आपको कोई एयरक्राफ्ट जो है वो चाहिए। सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू के डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट द एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है।
कि एक स्टंट प्लेन का एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है और एक स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट का एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है। वैसे बाय द वे मैंने जो मैं भी खैर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड करूंगा लैब 1 की, तो उसमें आप लोगों को एक थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही गया था। मैंने लैब 1 में डिफाइन किया था कि एस्पेक्ट रेशियो किसका कितना होता है। सही है। तो इन दोनों के एस्पेक्ट रेशियो आपको पता लग गए। हैव समथिंग इन बिटवीन, लाइक मैंने यहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट का एस्पेक्ट रेशियो रखा हुआ था 6.14। सही है। नाउ यू नो द एस्पेक्ट रेशियो, यू नो द स्पैन, कैलकुलेट द कॉर्ड। आपके विंग का कॉर्ड आ जाएगा, कॉर्ड आ जाएगा तो आपके पास एरिया आ जाएगा, एंड एरिया आ जाएगा तो इसी तरह आपने फिर बाकी फार्मूलाज यूज करके सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। इसी तरह जैसे फ्यूजलाज की लेंथ कितनी होगी, फ्यूजलाज की लेंथ होगी 75% ऑफ द विंग स्पैन। So you guys already know the wing span. Calculate the fuselage length. Aileron का area कितना होगा, 15 to 18% of the wing area. Now once you find the area, you can calculate the aileron area के ailerons कितने बड़े बनेंगे। ठीक है। The same as that. So once you're done with your wing, you guys can easily calculate everything else. See? So okay. यहाँ पे लिफ्ट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। सही है। कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट ऑब्वियसली आप लोगों को सॉफ्टवेयर से पता लगेगी, नॉट थ्रू हियर। बट एस इज योर विंग एरिया, बी इज द डेंसिटी, v is the rate of change, your velocity, how fast you're going, stuff like that. So you guys can find out your left, but we don't even need to do that because the software will do everything else for us. हमें सिर्फ डिज़ाइन करना है अपना एयरक्राफ्ट, हमें सिर्फ रेट्स डिज़ाइन करने हैं, कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस करके हमें सारी चीज़ें इनपुट करनी है, एंड द एयरक्राफ्ट will be there, and the rest the software will handle. ठीक है। सो अच्छा, विंग लोडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेट्स सपोज तुम 2 kg का एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हो, तो यू गाइज ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट कि आपके जो एयरक्राफ्ट के विंग है, ऑब्वियसली देखो जैसे एक इंसान है, इंसान का पूरा वजन उसके पैरों पे होता है। सही है। अगर तुम्हारे खुदा न खास्ता पैर काम करना छोड़ दें या डैमेज हो जाए, सो तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते। तो दैट इज हाउ, अगर आप एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो एयरक्राफ्ट का सारा वजन उसके विंग पे होता है। So that is why wing loading is a very important aspect of an aircraft. So आपको पता होना चाहिए टोटल वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड एरिया ऑफ द विंग। ठीक है। विंग एरिया कितना है और टोटल वेट कितना है। तो विंग लोडिंग शुड बी यू नो around your weight, less than your weight, sorry, more than your weight. ठीक है। समथिंग लाइक दैट, आई विल कंफर्म दिस। ठीक है। विंग एरिया, बाकी विंग एरिया के और भी फॉर्मूलाज हैं। So that's just it. That's all, I guess. If you guys have any questions, ask me now, or you guys can also contact me on our WhatsApp group or comment down below, whatever you feel like. So, do you guys have any questions? नहीं, आई मीन या, बट इसे बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। लाइक इन दिस लैब हम लोग अभी इंशाल्लाह ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद नेक्स्ट लैब में एक्सएफएलआर पे प्लेन बनाना सीखेंगे। तो एक्सएफएलआर पे पूरा प्लेन डिज़ाइन हो जाएगा। जब पूरा प्लेन डिज़ाइन हो जाएगा उसकी आप सिमुलेशंस कर लोगे। सिमुलेशंस करने के बाद, नो, तेरिंग द आंसर इज यस, यू कैन, बट there is a process. So simulations करने के बाद जो है you guys move on to datcom. datcom उसे रिफाइन करता है सारी सिमुलेशंस को। सारी सिमुलेशंस को रिफाइन करने के बाद हम लोग जाते हैं मैटलैब पे,
और मैटलैब से हम जो सेम एयरक्राफ्ट है उसे कंट्रोल करते हैं विथ नॉट एक्सप्लेन फ्लाइट गियर, ठीक है। सो द प्रोसीजर टू गो टूवर्ड्स एक्सप्लेन, उसके बीच में एक और सॉफ्टवेयर आता है दैट इज AC3D, ठीक है। AC3D पे आप अपने जो एयरक्राफ्ट का जितना भी डेटा होता है, जितने भी रेट्स होते हैं एंड एवरीथिंग, सॉल्यूशन होता है जो उसका पूरा, जो कि उसके कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट एंड ये वो फलाना ढमाका हजारों की तादाद का जो है ना वो डेटा होता है, वो सारा डेटा आप AC3D पे along with the मॉडल ऑफ योर प्लेन उसे लेकर जाते हैं, वो मजीद उसे रिफाइन करता है फॉर इट टू बी सिमुलेटेड ऑन एक्सप्लेन। So then you move forward to explain. तो ये एक्सप्लेन पे आपको अपना एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करके उसे रिफाइन करना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सप्लेन हैज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फ्लाइट gear has an open platform, so yeah. So normally we will go towards flight gear, but yeah, you can go to explain as well, you can, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिंक्स दीज आर नॉट, ओके खैर। सॉफ्टवेयर का मैं एक काम करता हूँ कि सॉफ्टवेयर्स में AC3D इज अ हैवी सॉफ्टवेयर along with flight gear, so MATLAB you guys already have, तो खैर तब तक तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं XFLR और आई थिंक डेटकॉम, ये सॉफ्टवेयर्स मैं अपलोड कर दूंगा somewhere on a maybe Google Drive, and I will post the link then, ठीक है। Any other questions? Yes, Ahmed. Stunt plane is from 4 to 5. So that is why we chose 6.15 something, 6.14. Exactly. Very nice. Thank you very much. So we have selected around 6.14 something like that. It's more towards the stable side. That is why हमारा मैंने वही पहले भी इस चीज को क्लियर किया था कि सारिम जो है वो that was not a stunt plane. It was very stable. It could hardly make an inside loop. So obviously Sarim was not up for the task, but it was a stable plane. So that is why go something somewhere between 5, go for 5 or 5.5 something like that, more towards the stunt plane category. एंड या लैब में एक्सेफ्लर यूज होगा, डेटकॉम यूज होगा, फ्लाइट गेयर यूज होगा, AC3D यूज होगा, मैटलैब यूज होगा। वेल फिलहाल यही, अदरवाइज स्टार CCM भी मैं इंक्लूड करवाने की सोच रहा हूँ। खैर उसके लिए देयर वुड बी अ मीटिंग एंड देन वी विल डिसाइड। सो दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुडे। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay then. So this is the end of our lab. Uh, Good luck and take care and Allah Hafiz. See you in the next lab.